ऑयल प्रेजेंट था और उसमें से हमने कितना परसेंटेज प्रोड्यूस किया। सो रिकवरी हम बेसिकली परसेंटेज में लेंगे। एंड ऑयल रिकवरी, हमारा गोल रहता है कि हम क्रूड ऑयल के रिकवरी को मैक्सिमाइज करें, क्योंकि क्रूड ऑयल के साथ वाटर एंड गैस दोनों रहता है, बट हमारा टारगेट रहता है कि जितना हो सके उतना ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो, उसके बाद गैस प्रोड्यूस हो, या रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। क्योंकि हमें पता है कि रिकवरी तभी अच्छा होगा जब कोई हमारा जो फ्लूड है, लाइक रिजर्वायर फ्लूड है, दैट मीन्स द क्रूड ऑयल है, उसको कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स मिलेगा, जैसे कि वो फ्रॉम पोरस मीडिया टू दैट वेल हेड एंड फ्रॉम वेल हेड टू सरफेस प्रोड्यूस हो सके, दैट वी ऑलरेडी नो व्हाट वी so we know recovery. Then what do you understand by enhanced oil recovery? Can anyone have a view on this? मतलब जो ऑयल रेसिड्यू ऑयल जो होता है, Yes. Yes, yes, go ahead. उसको हमें रिकवर करना हो Yes. तो उसको हम इनहेंस ऑयल रिकवरी बोलेंगे। या तो ये रेसिडुअल ऑयल कब रहता है? प्राइमरी प्राइमरी रिकवरी एंड सेकेंडरी रिकवरी जब कंप्लीट हो जाए, ओके। उसके बाद सेकंड जो रहता है तो ऑयल कि आए जो ही नहीं है ना। अट्रैक्ट रहता है रॉक से। यस यस यस। ओके ओके, आई अंडरस्टूड। ओके, सो द लाइक ऑयल रेसिडुअल तभी बचेगा कि जब रिजर्वायर की एनर्जी खत्म हो जाए, करेक्ट? जो नेचुरल एनर्जी है रिजर्वायर के पास वो खत्म हो जाए, तभी वो ऑयल रेसिडुअल के बेसिस पे रहेगा। और उसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये सब आई थिंक रिजर्वायर अगर कवर किया है तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर है जो ऑयल की रिकवरी पे इम्पैक्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट दैट लिटिल बिट। सो ऑयल की रिकवरी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? reservoir pressure, यस। permeability, रिजर्वायर प्रेशर, यस। परमिबिलिटी ऑफ दैट रिजर्वायर, यस। uh, and the saturation of fluid. Saturation of fluid, yes, you can say that, like, okay, but we can say that when reservoir pressure is not sufficient to produce that crude oil, then right now, विस्कोसिटी। yes, crude oil properties, viscosities, then density. Yes, good. Okay, so these are the, like, हमें पता चल सकता है कि ये सारे फैक्टर से डायरेक्टली ऑयल रिकवरी इम्पैक्ट होता है। Does capillary pressure impact on oil recovery? You know what is capillary pressure, right? Yes, yes, sir. Okay. Can you tell me the capillary pressure value when fluid flows through the pipe? Like हमारे घर पे भी जो पाइप रहता है तो हम मोटर लगा के वाटर ग्राउंड फ्लोर से टॉप पे ले जाते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिलरी फोर्स इन दैट? Okay, okay. So any answer? You know the formula for capillary pressure? Hello? Yes, any answer for that? 2 sigma cos theta upon r. Okay, okay, okay. Okay, so this is the formula for capillary pressure. What is sigma here? Interference tension.
Yes, but between what? Surface to water, water to oil, between what this sigma? Surface tension or interference. Yes, but between what two components? Like it can be surface and water, it can be surface and oil, it can be water and oil. Consider right now as a water oil system. Okay. Between which two component? Like is it between water and oil, or between surface and oil, or between surface and water? Oil and Oil and water. water. Okay, good. Oil and water, very good. This is between oil and water, and combinedly this term known as you know what is this sigma cos theta, and its value is equal to what? Now you can answer. Adhesion tension. Yes, adhesion tension, very good. And its value is equal to what? You know, in terms of sigma of oil surface and sigma oil surface and water. Don't try to answer. Okay, just answer. If it is wrong, then don't. Nothing wrong with that. जितनी ज्यादा एरर होती है उतना ज्यादा सीखने को मिलता है, बट ये फाइनल राउंड पे नहीं होना चाहिए, उतना ध्यान रखना है फर्स्ट गेट में. Okay, so I think all of you guys आप लोगों ने कैपिलरी प्रेशर का डेरिवेशंस किया होगा, राइट? At least in reservoir, at least in college you did that, even if you has not prepared for gate, then again if you are not preparing for gate, again at least you did that derivation during school. Even if in school you did that, but I let's tell me one thing, are you all guys are from Gujarat board or CBSE board? Is there anyone who is not from the Gujarat board? सब गुजरात बोर्ड के ही है. Okay, so do you know what is Shanta? શાંતાનો અચળાંક આવ્યો જ હશે લગભગ અત્યાર સુધી તો, અને કદાચ કોઈને ખબર સાંભળેલું છે છે પણ શાંતા? યાદ નથી. હા. શાંતાનો અચળાંક એટલે વિસ્કોસિટી. ओके ओके, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वरना अभी खामखा इस सेशन में. बट लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ऑयल माइनस सिग्मा ऑफ वाटर, एंड capillary pressure for, let's suppose okay, let's discuss this third term. What is this? R. रेडियस. Yes, just try एटलीस्ट ट्राई करो कि आंसर जो दे रहे हो वो completely like indication हो रेडियस, बट which radius? Like रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. yes, radius of capillary tube. And if चलो मैं अपने रिजर्वायर को एज अ कैपिलरी ट्यूब मान रहा हूं, तो इट इज अ रेडियस ऑफ अ पोर. ओके, करेक्ट? यस. Yes. Okay, so this is a radius. You know what is the like रिजर्वायर जो होता है अपनी, उसमें हम कितनी रेडियस पे काम करते हैं? लेट्स सपोज मुझे डार्सी लॉ अप्लाई करना है, तो वो कौन से स्केल पे अप्लाई होगा? नैनो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, या मैक्रो लेवल पे? अरे I बता think यार, तो गेट micro का level पे. मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, या नैनो लेवल पे? That means you all guys are not yet are not gone through the GATE question papers, right?
आप लोगों ने सबने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए? हाँ नहीं सर, नहीं सर। मैंने किए हैं थोड़े। मीन्स किए हुए हैं थोड़े बहुत। ओके, सो डू वन थिंग बाय टुडे इटसेल्फ और बाय टुमारो इटसेल्फ, एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के फर्स्ट गो थ्रू करना। जो भी क्वेश्चंस है जस्ट उसको एक बार रीड कर लेना एंड थिंक ऑन दैट कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं क्वेश्चंस, बिकॉज पैटर्न मोस्टली सेम फॉलो होता है, न्यू थिंग्स आती है उसमें, बट हमें उसके लिए ही प्रिपेयर रहना है कि जो न्यू थिंग्स उसमें ऐड होती है, ठीक है। एंड एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करना है साथ में, ओनली न्यू थिंग्स जानने से नहीं होगा, एक्यूरेसी होगा तभी स्कोर ऊपर जाएगा। ओके, सो बेसिकली द डार्सी लॉ इज अप्लाई एट अ स्केल ऑफ अ मैक्रो लेवल। ओके, ये गेट का क्वेश्चन है एंड हम रिजर्वायर पे अराउंड मैक्रो लेवल पे काम करते हैं। बट व्हेन जब हम ट्यूब कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज ट्यूब, हर कोई ऐसा जो लॉजिकल आंसर होता है ना थियरी का, वो फॉर्मूले में छुपा होता है। नाउ यू कैन आंसर व्हाट इज द कैपिलरी प्रेशर वैल्यू फॉर दिस ट्यूब। थिंक फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली। और इसका नोट बनाने का जरूर नहीं है, मैं ये कैपिलरी वाला कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा इन नेक्स्ट सेशन, और हम ये पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद ही एक्चुअल कोर्स कंटेंट पे आएंगे। क्योंकि लेट सपोज अगर आपको बेसिक्स ही पता नहीं है और हम बात कर रहे हैं कि इससे कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, तो एट दैट टाइम तुम्हारा माइंड उस थिंकिंग पे काम नहीं करेगा। इसलिए थिंक अबाउट रेडियस एंड गिव मी द आंसर हेलो। विथ दिस। यस, यस, गो अहेड। बोलो, कुछ बोलो, क्या सोच सकते हो इससे कि ये जो ट्यूब होगा उसमें क्या होगा? वैल्यू हाई होगा, नियर टू जीरो होगा, या क्या होगा? एंड रीजन के साथ बताओ कि क्यों ऐसा होगा। जस्ट फॉर्मूला पे फोकस करो। देर आर ओनली 3 टर्म्स, सिग्मा, कोस थीटा एंड आर। बेस्ड ऑन दीज 3 यू कैन थिंक। मतलब सपोज रेडियस हमारी ज्यादा है तो कैपिलरी प्रेशर तो यस, कम सिंपल। ही होगा। ज्यादा है तो कैपिलरी प्रेशर नेग्लिजिबल होगा या कम होगा। सिंपल थिंग, ओके। बट रिजर्वायर में यस। कैपिलरी फोर्स हर बार नेग्लिजिबल नहीं होगा, वो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ओके, गुड। ओके, सो हम अब हमें पता है कि जो रिकवरी पे कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम ये सारी मेथड डिस्कस करेंगे ना, तो उसी फैक्टर पे हम बात करेंगे। कैन आई से डेप्थ इज इम्पैक्ट ऑन रिकवरी, डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर? लेट सपोज मेरा रिजर्वायर 2000 फीट पे है और 6000 फीट पे है, तो डज डेप्थ इम्पैक्ट ऑन रिकवरी? यस सर। हाउ? अभी ज्यादा प्रेशर होगा, यस, यस, करेक्ट। डेप्थ ज्यादा एरिया पे यस, यस, तो ज्यादा डेप्थ होगा तो मतलब ज्यादा रिजर्वायर गैस। प्रेशर होगा, बट ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, ठीक है। बट ये ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर होगा तो रिजर्वायर का प्रेशर भी ज्यादा होगा। बट अगेन, अगर रिजर्वायर का प्रेशर ज्यादा है, बट इन दैट केस हमें और एक चीज कि हाइड्रोस्टेटिक हेड भी अलग होगा, राइट? और हमें बॉटम से फ्लूइड को टॉप पे भेजना है, तो इन दैट केस अगेन इट विल इम्पैक्ट। ओके, लाइक हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट फ्लोर पे पानी चढ़ाना है और 8th फ्लोर पे पानी चढ़ाना है, दोनों केसेस में डिफरेंट एनर्जी लगेगा, तो दैट इज अगेन इम्पैक्ट ऑन रिकवरी परसेंटेज। then can you think any other impact factor of recovery? विस्कोसिटी तो बेसिक पता है कि अगर हैवी क्रूड ऑयल है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, ज्यादा डेंसर क्रूड है। ओके, देन एनी अदर फैक्टर इफ यू वांट टू डिस्कस हियर?
Wettability, sir. Wettability, yes, correct. But okay, yes, wettability. And how does it impact? Like which rock is good for us, water weight or oil weight? Water weight. Water weight rock. Water weight. Mm-hmm. You know this curve? I think oil recovery is here. Wettability characteristic here. You know this kind of curve. Have you gone through Abhijit Dandekar? Yes. यस तो यहाँ पे मैक्सिमम रिकवरी मिलता है और यहाँ पे आई थिंक सैचुरेशन होता है. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट बट लेट कंसिडर दिस टू ओनली राइट नाउ. तो ये वाला रॉक कौन सा होता था? बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज है जो अभिजीत दांडेकर में ग्राफ्स में छुपे हुए हैं. तो कोई भी ग्राफ से उसको स्किप मत करना. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और उसको एक नॉवेल की तरह पहले पढ़ लो. नॉवेल की तरह मतलब बहुत स्पीड से एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ा अच्छे से पढ़ो और फिर नोट्स बनाओ. ठीक है, ये जनरली फॉलो करो हर बुक से, इधर एच राबिया हो या कोई भी हो, ताकि पता रहे कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. ये होता है मिक्स्ड वेट. ओके, रिमेम्बर वन थिंग. यू नो व्हाट इज मिक्स्ड वेट? मतलब ऑयल वेट भी होगा थोड़ा और वाटर वेट भी होगा. Yeah, I think there are two more terminology: mixed wet and yes, oil wet, water wet and mixed wet. So remember these things और ये ग्राफ को भी रिमेम्बर करना. Okay, anything other factor is remain? कैपिलरी प्रेशर हो गया, वेटेबिलिटी हो गया, and surface tension definitely, interference tension definitely, because we know that you know not that like capillary pressure is depends upon these three things: wettability and interference tension. Then wettability is depend upon next two things like that. That sequence I think you already studied in reservoir. Yes. Yes, okay. If अगर नहीं पता है तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना उससे. रिजर्वायर को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसको इम्प्रूव करो. इफ यू हैव एनी डाउट और एनी टॉपिक ऑफ रिजर्वायर जो समझ में नहीं आ रहे या कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं है, ये ओके. सो आज का सेशन ऐसे ही है. आज कोई नोट्स या ये बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट आई वांटेड टू नो कि अगर बेस क्लियर है कि नहीं. सो हम ऐसे ही डिस्कशन करते हैं आज. कल से आई विल स्टार्ट विथ प्रॉपर दिस सीक्वेंस. ओके, एंड ये चीज नोट कर लेना. ओके, ऑयल रिकवरी कहाँ पे ज्यादा होता है और ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी जरूरी है. वाटर वेट रॉक है तो उसमें वाटर क्या होगा, रॉक्स के साथ चिपक गया होगा. ठीक है. ऑयल है तो दैट मीन्स कि वाटर ऑक्यूपाइज इन स्मॉल स्पोर्स, राइट? एम आई करेक्ट? अगर वाटर वेट रॉक है तो वाटर ऑक्यूपाइज इन स्मॉल स्पोर्स. यस, you know that capillary hysteresis and all things. Okay, so ऑयल वेट है तो दैट मीन्स ऑयल आर इन स्मॉल पोर्स. और उस केसेस में हमें पता है कि जो परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, जो भी नॉन वेटिंग फेज है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होता. दिस थिंग्स यू नो दैट कर्व्स, रिलेटिव परमेबिलिटी कर्व्स यू ऑल नो. ओके, करेक्ट? You know na this curve. Let's consider for a water weight system. Yes, drainage and imbibition. Yes, sir. drainage and Yes. imbibition. Yes, तो ये ड्रास्टिकली यहाँ पे रिड्यूस होता है और यहाँ पे ये ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होता है. ये इसमें नोट करना होता है. और यहाँ पे ABC. इफ यू डोंट नो दिस थिंग देन तारिक अहमद से पढ़ लो एक बार. ओके, बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट है. So this is the important things. Next we can discuss. ओके, सो ये हो गया रिकवरी. जो रिकवरी पे इम्पैक्ट करते थे जो भी पैरामीटर्स, तो ये बार बार रिपीट हो गए हर एक यूआर मेथड में, बिकॉज अल्टीमेट गोल हियर इज टू एनहेंस द ऑयल रिकवरी.
अब बात करते हैं रिकवरी के टाइप पे। एक्चुअली इवन आई वाज इन आईएसएम और हमारा ये यूआर होता था लास्ट सेम में, और ये बहुत सीनियर फैकल्टी ने हमें पढ़ाया था। उसमें बहुत सारे व्यूज है रिकवरीज में। बहुत सारे लोग किसी को प्राइमरी में कंसिडर करते हैं तो बहुत सेकेंडरी में, बिकॉज आई नो टू डिफरेंट प्रोफेसर पे को सेम क्वेश्चन पूछने पे अगर डिफरेंट आंसर मिल रहा है, दैट मीन क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई बुक तो पढ़ा ही होता है। तो बुक से ही हम बेसिकली सीखते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस और उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसमें कोई फिक्स ऐसे कंसिडर करना जरूरी नहीं है कि ये वाली मेथड लाइक इसी में होगा। लाइक गैस इंजेक्शन है तो सेकेंडरी है या टर्सरी में भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। आई डोंट थिंक इस पे कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बट बेसिक ये आइडिया पता होना चाहिए गेट के रिलेटेड। एक्सेप्शनल होते हैं बहुत सारी बुक्स में, कई बार अच्छे से कोई कोई ऐसा रीजन देके बोलता है कि हम इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे लिखा गया हो सकता है। But we consider three recovery for now: primary recovery, secondary recovery, and tertiary recovery. Okay. Let's have a discussion on type of recovery. So primary recovery is the recovery कि जो रिजर्वायर है वो अपनी एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके। बाय ओन एनर्जी। जो भी रिजर्वायर है वो अपनी एनर्जी से प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स कि जो इनिशियल प्रेशर है वो हाई है और उसके बाद हमने वेल ड्रिल किया और जो फ्लो है वो रिजर्वायर का फ्रॉम रिजर्वायर टू दैट वेल हेड नेचुरली अकर हो रहा है। और ये वाला जो फ्लो है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये रिकवरी प्राइमरी रिकवरी है, क्योंकि ये उसकी नेचुरल एनर्जी से फ्लो हो रहा है। ओके। अब टेल मी वन थिंग, अगर परमिबिलिटी हाई है और परमिबिलिटी लो है, लेट्स हैव अ टू केसेस। You know drive mechanisms, right? Yes, sir. Can you brief all five drives, like name of the all five drives? Can you brief? Yes, sir. Okay, start. Tell me Solution the- gas Rock, drive. rock and liquid expansion, sir. The depletion drive, gas cap, Yeah. water drive, Yes, gravity drainage, gravity drainage. Okay, good. combination. Okay, very good, very good. Okay. So you know this combination drive, yes. Okay. तो ये ड्राइव्स है। सो कैन यू टेल मी कि लो परमिएबल जोन है, हाई परमिएबल जोन है, तो लो परमिएबल जोन में कौन सी ड्राइव डोमिनेंट हो सकती है? क्या सर? Like let's suppose I have a two reservoirs. Okay, one which have one reservoir has a low permeability and another reservoir has a high permeability. तो लो रिजर्वायर में कौन सी ड्राइव का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है एंड हाई परमेबल रिजर्वायर में कौन सी ड्राइव का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है? कंसीडर फॉर नाउ गैस बेस्ड ड्राइव और वाटर बेस्ड ड्राइव। ओके, solution gas drive, water drive. Consider these three for now, because you know gravity drive is effective only when we have a tilted reservoir, and combination drive for now don't consider that also. Let's suppose you have options such as solution gas drive, water drive. Dominant of both of the drives are equal and none of these. So let's suppose which drive can impact more when we have a low permeability and which drive can impact less when we have a high permeability. Same question बोल दिया क्या? Yes. लो permeability में कौन सा dominant होगा and high Gas cap. permeability में कौन सा?
लो परमेबिलिटी में गैस कैप, एंड रीजन इज वेरी सिंपल. यू कैन tell me the reason, what you think about it. It can easily move through small porous media. Yes, it can be easily moved through smaller media. And what is the reason gas can easily move through smaller media than water? High mobility. High mobility is the reason. Like when you say gas is moving faster than water, it means itself high mobility. I want to know what is the reason. Low molecular weight. Low molecular weight is one of the reason. Can you think related to reservoir based on the rock properties? We just discussed that thing bit a moment ago. Wettability, sir. Yes, wettability, correct, very good. So wettability is water weight, that means gas can move faster, okay, from low permeable reservoir. And in high permeable reservoir, again, water is dominating in larger pores, so it has high that, then means water can dominate. Okay, and from which dry we can get better recovery? Among all, not from these two, among all. Water drive. Yes, water drive, correct. Okay, so as we have a good idea about recovery right now, okay, and as we have idea of recovery, now we have idea on primary recovery also. And जब बॉटम होल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, कि हमें बॉटम होल प्रेशर हम कम नहीं कर सकते, क्यों कम नहीं कर सकते उसके रीजंस पे पहले डिस्कस करते हैं. देन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट आर दी वे वी कैन यूज सो फ्लूइड को बॉटम होल से सरफेस पे इजीली लाया जा सके. As already you may cover these all things, but have a discussion on it first because it's discussion session. So let's suppose tell me the reason हम particular वैल्यू से बॉटम होल प्रेशर की वैल्यू कम नहीं रख सकते. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन यू थिंक? मतलब फ्लूइड जो है हमारा, तो वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा सरफेस तक. नहीं 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 नहीं, एक्चुअली हमारा ओके जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू विद डायग्राम. सो ये हमारी सरफेस है, ओके, ऐसे क्यों है? ओके, जस्ट लेट मी चेंज द पेन. ये अपना सरफेस है एंड ये अपना, इज इट विजिबल ना? वो बीच में लोगो आ नहीं रहा ना? हेलो, मैं ऑडिबल? हाँ, वो लोगो आ रहा है, Yes, पर sir. दिख रहा है. ओके, बट ये राइट साइड का तो दिख रहा है ना? ओके, वो थोड़ा एक्चुअली टैब से है ना, तो वो लोगो को मैं मिनिमाइज नहीं कर सकता इसमें. वन मोर थिंग, अगर कोई इंटरव्यू में तुम्हें कोई कुछ पूछ रहा है, ओके, और वो कभी भी वेल की प्रोफाइल ड्रॉ करने को बोल रहा है, तो कभी भी ऐसे स्ट्रेट मत ड्रॉ करना, ओके, ऐसे ऐसे ही ड्रॉ करना जैसे केसिंग वाला. ओके, सो लेट सपोज ये अपना रिजर्वायर है एट इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर, और यहाँ से अपना फ्लूइड यहाँ पे आता है, ठीक है. पहले दिस इज FFPM, इवन FFPM इज अ सब्जेक्ट इटसेल्फ, एंड यहाँ पे अपना होता है बॉटम होल प्रेशर, करेक्ट. और उसके बाद अपना फ्लूइड यस सर. वो मूव करता है. ओके, सो हम रिकवरी को बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे. लाइक प्राइमरी रिकवरी वी कैन से, अगर रिजर्वायर प्रेशर जब डिक्रीज हो जाए और वो अपनी नेचुरल एनर्जी से प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है. मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें ये बॉटम होल प्रेशर की वैल्यू सेट करनी है, ओके. तो ये वैल्यू में भी लेट सपोज ये रिजर्वायर प्रेशर है अपना इनिशियली 5000 PSI,
is it high value or is it okay value? Have you heard where reservoir pressure is 5000? Yes, it's okay. ओके एंड वी कैन से दैट ये वाला प्रेशर हम 1000 psi रखते हैं इनिशियली, तो हमें यहाँ पे मिलता है एनर्जी ऑफ 4000 psi का एनर्जी हमारे फ्लूइड को मूव करवाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है. वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू यूनिट ऑफ द एनर्जी, ओके, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स एंड व्हाट. मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 1000 psi है, ये वाली वैल्यू हम 8000 psi भी रख सकते हैं, हम 6000 psi भी रख सकते हैं, but we cannot go beyond one particular limit. उससे रिकवरी बढ़ने की जगह कम होगी. इवन दिस गैप इज इंक्रीजिंग. एनर्जी बढ़ रहा है क्योंकि 8000 में गैप होगा कितने का? ओके सॉरी यहाँ पे 5000 होगा और ये 3000 होगा एंड ये वाला गैप 1000 होगा. ओके, करेक्ट. ओ सॉरी करेक्ट ही था. 1000 लिखा है, मुझे 10,000 लिख गया. Okay, not an issue. 5000. Okay, sorry, my bad. 5000 minus 1000 means 4000. 5000 minus, sorry, 5000 minus, okay, ये वाली वैल्यू मुझे कम करनी थी. Sorry. Let's have again this question again. Okay, ये 1000 psi है. मुझे यहाँ पे 10,000 वैल्यूज पहले मैंने अज्यूम कर लिया. ओके, 1000 psi है, तब हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है 4000 psi की. हम इसको कम कर सकते हैं 800 psi, तब हमारे पास सॉरी बहुत मिस्टेक्स हो रही है अभी, बट ये बहुत टाइम के बाद अभी डिलीवर करना स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी. 5000 माइनस 1000, 4000 psi की एनर्जी है हमारे पास. 5000 माइनस 8000 मतलब कि ये वाला अब हो जाएगा, करेक्ट. और Yes, इसके sir. बाद अगर और भी मैं कम कर रहा हूँ, इन दैट केस ये और रिड्यूस हो जाएगा 200 जितना, और ये इंक्रीज हो जाएगा 200 जितना, और ये हो जाएगा करीबन इतना. तो हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है, बट फिर भी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से बियॉन्ड नहीं जा सकते. हम 6000 नहीं सिलेक्ट कर सकते, हम इसी पे स्टिक रहते हैं. ऐसा क्यों? रिजर्वायर में कुछ ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने कि हम Coning. पर्टिकुलर, यस कोनिंग हो जाएगा. कोनिंग हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा गोल है ऑयल रिकवरी को बढ़ाना, बट उसमें ऑयल की जगह गैस और वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा, और वो इनिशियल प्रेशर को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है. तो ये रीजन है कि हम पर्टिकुलर बॉटम होल पे हमें रहना पड़ेगा. अब ये वाला जो जब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम इनिशियली कांस्टेंट बॉटम होल पे भी प्रोडक्शन लेते हैं या फिर कांस्टेंट फ्लो पे भी प्रोडक्शन लेते हैं. देयर आर टू केसेस. इफ यू नो एनी सिमुलेशंस टेक्निक्स, और तो वहाँ पे ये दो कांस्टेंट हम यूज करते हैं कि कांस्टेंट फ्लो पे भी हम प्रोडक्शन लेते हैं और कांस्टेंट बॉटम होल प्रेशर पे भी हम प्रोडक्शन लेते हैं. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू एक्सपीरियंस पीपल हु आर करंटली वर्किंग इन ONGC और some oil India, so they can guide you more on this. हम किस कंडीशन पे किस पे लेते हैं. तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, लेट सपोज ये वाला भी रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली हम आफ्टर some time we can reduce this value and we can select this value. बट अब ये कंप्लीटली यहाँ पे लेट सपोज इनिशियली ये प्रेशर हाई है और हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से बिलो पे नहीं जा सकते, बट हमें ये वाली वैल्यू भी बैलेंस करनी है. ओके, यू नो IPR, यू नो OPR, करेक्ट. यू गाइज हैव एटलीस्ट आइडिया अबाउट इनफ्लो परफॉर्मेंस कर्व एंड आउटफ्लो परफॉर्मेंस कर्व. यस सर. एंड यहाँ से जो जाएगा ऊपर, यहाँ पे जो बॉटम होल का प्रेशर रहेगा और उससे सरफेस पे जाएगा, वो 3 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करता है. कैन एनीवन टेल मी दैट 3 एनर्जी? और Friction, hydrostatic, and kinetic energy. फ्रिक्शन, हाइड्रोस्टेटिक एंड काइनेटिक. Kinetic. Okay, correct. So there are 3 kind of losses, you know.
One thing is hydrostatic loss. Second one is kinetic. Hydrostatic itself means, I think, that स्थिति ऊर्जा means static loss. Okay. સ્થિતિ ઊર્જા, ગતિ ઊર્જા અને ઘર્ષણ. So third one is the friction. These three are dominating. Okay, correct. We consider these two as a vertical losses, and we consider kinetic as a separate one. I don't know actually right now, but these three forces are mostly present. Fourth one is a pressure energy. Guys, do you know Bernoulli equation? Yes, sir. Yes, yes. Yes. So you have studied in that prime mover in that subject, correct? In college. Or do you have that subject fluid mechanics? मनन सर ने या किसी शिवा सर ने, किसने पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स? शिवा सर ने. शिवा सर ने. वो तो शिवा सर ने पढ़ाया थे. ओके ओके ओके. एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. उस अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पे तुम लोगों का अच्छा वो है ना, पकड़ है अच्छा, तो यू कैन सॉल्व दिस ऑल इजीली. हम डाउनस्ट्रीम में हमें मनन सर ने पढ़ाया था और उन्होंने गेस्ट लेक्चर अटेंड करवाए थे रिलेटेड टू दिस हीट एक्सचेंजर्स एंड ऑल स्टफ. सो वो थोड़ा लाइक वो जो ठाकुर सर थे वो एलडी कॉलेज से थे और वो बहुत सीनियर फैकल्टी थे, तो उन्होंने बहुत मीन्स एक बहुत अच्छा करवाया था कंपैरेटिव टू व्हाट अदर फैकल्टीज कैन डिलीवर. बट अगर समझ में नहीं आता है और इफ यू वांट वन सेशन ऑन दैट देन आई विल डेफिनेटली डिलीवर. सो अभी हम थे यहाँ पे, तो जब भी हमारा ये बॉटम होल रिड्यूस हो जाता है तब हम यहाँ पे आर्टिफिशियल लिप लगाते हैं. ठीक है, दैट यू ऑल गाइस नो. यहाँ पे हो जाएगा आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम, ताकि हम एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज जस्ट कंसिडर इट एज अ पंप. ये पंप ही है एक टाइप का. हम घर पे भी जब एनर्जी लॉस हो जाए, अगर म्यूनिसिपालिटी से अच्छा फ्लो नहीं आता है तो हम घर पे भी मोटर लगाते हैं, वैसा ही ये पंप है बट थोड़ा बड़े लेवल का है, कैपेसिटी ज्यादा है. तो दिस इज ऑल अबाउट रिकवरी. सो ये था हमारा प्राइमरी रिकवरी. सो हम आर्टिफिशियल लिफ्ट को भी प्राइमरी रिकवरी में ही कंसीडर करते हैं और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है. जस्ट सिंपली किसी को भी पूछो तो एक ही आंसर देता है कि हम आर्टिफिशियल लिफ्ट में रिजर्वायर के साथ कुछ भी चेंज नहीं करते हैं. दैट इज द रीजन हम इसको कंसिडर करते हैं कि कंसिडर इन प्राइमरी रिकवरी. सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर्टिफिशियल लिफ्ट और अब इसको हटा देता हूँ. ठीक है, artificial lift is a primary recovery. Then move to the secondary recovery. And let's have a note on tertiary recovery as well. सो अब रिजर्वायर के पास कोई अपना नेचुरल एनर्जी नहीं है, तो ऑलरेडी हमने मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन किया है. तो हम क्या करते हैं, हम उसमें आइदर वाटर इंजेक्ट करवाते हैं या गैस इंजेक्ट करवाते हैं. सो वाटर इंजेक्शन एंड गैस इंजेक्शन. हम जब ये इंजेक्शन करवाते हैं इससे क्या होता है कि अपना जो रिजर्वायर का प्रेशर है वो एट सर्टेन वैल्यू पे इंक्रीज होता है और जिससे हमारा रिकवरी इंप्रूव होता है. तो these two recovery combinedly known as the tertiary improved oil recovery.
improved oil recovery. Just note it down. Secondary recovery and tertiary recovery combinedly known as the improved oil recovery. And tertiary recovery, this is again IPR, improved IOR, and IOR, and tertiary recovery alone is known as the enhanced oil recovery. ओके, सो जो टर्सरी रिकवरी है उसे ही हम एनहेंस ऑयल रिकवरी कंसिडर करते हैं. तो हमारा रोल क्या है इन सेकेंडरी रिकवरी? मैंने एक बुक पढ़ा था इस पे, उसमें लिखा गया था कि ऑयल एंड गैस इंजेक्शन आर सेकेंडरी रिकवरी, क्योंकि ऑयल एंड गैस जब हम इंजेक्ट करवाते हैं, और जब ये वी नो गैस है तो वो इमिसिबल एंड मिसिबल बोथ हो सकता है. जैसे कि CO2 इंजेक्ट किया तो CO2 मिसिबल भी हो सकता है और CO2 नॉन मिसिबल भी हो सकता है. we will discuss miscibility when we will discuss this all recovery methods, but for now just not one thing, gas injections and water injections, we consider these as immiscible water and gas injection. पर्टिकुलरली हम ये इमिसिबल वाटर एंड गैस इंजेक्शन को सेकेंडरी रिकवरी कंसिडर करके चलेंगे. ओके, एंड इन टर्शरी रिकवरी, टर्शरी रिकवरी इज द रिकवरी जहां पे हम एडिशनल 20 to 30% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वंस ऑल अदर 2 रिकवरीज completed. Or in tertiary oil recovery, we consider the methods which directly impact on the property of this crude oil or property of the reservoirs. Let's suppose consider polymer injection. So this is one kind of tertiary recovery method. तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पोलीमर को इंजेक्ट करवाएंगे एंड जो पोलीमर इंजेक्ट होगा वो क्या करेगा, क्रूड की कोई प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करवाएगा और उससे हमारा रिकवरी इम्प्रूव होगा. सो टर्शरी रिकवरी इज मेथड. अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है, ओके, बट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे पूछेगा कि ये वाली मेथड थर्मल है, ये वाली मेथड इमिसिबल है. सो मैं कॉमन लिस्ट एक यहाँ पे लिख रहा हूँ. अगर आपको ज्यादा मेथड पता है, कोई इसमें नहीं है, ओके, और वी कैन सी वन, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन हैव अ कोर्स विथ अस, सो वी कैन डायरेक्टली हैव अ डिस्कशन. यस, EOR मेथड्स, ओके, तो कोर्स में ही लिख दिया है क्राइटेरिया कि हमें ये मेथड पे फोकस करना है. ओके, फर्स्ट वन इज अ केमिकल फ्लडिंग, second one is a miscible flooding, third one is the thermal recoveries, and fourth one is the microbial EOR. In chemical flooding, do you have any idea which are the methods are available for chemical flooding? No, sir. So you don't have any idea, I'm considering right now, as you don't have even heard about these methods before this, right? Hello? Say yes or no, there is nothing wrong. Okay. Hello. So you don't have, yes, you don't have idea, right? Correct. Okay. Not an issue. We will go through these all methods one by one, और इसमें से थियरी बनेगा, बट उतना हार्ड नहीं है, बट उतना कोई हार्ड या उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी मेथड्स है. सो यू नो वाटर इंजेक्शन एंड गैस इंजेक्शन एटलीस्ट, राइट? सिंपल है, हम वाटर इंजेक्ट करवाएंगे ताकि वो रिजर्वायर के प्रेशर को इम्प्रूव करेगा. इन गैस इंजेक्शन देयर आर 2 सब ब्रांचेस, वन इज अ मिसिबल गैस इंजेक्शन, अनदर वन इज अ इमिसिबल गैस इंजेक्शन. इन मिसिबल गैस इंजेक्शन, लाइक यहाँ पे ही लिखा है मिसिबल फ्लडिंग. मिसिबिलिटी, डू यू नो व्हाट इज मिसिबिलिटी, और डू यू हैव एनी डेफिनेशन फॉर मिसिबिलिटी?
मीन्स सर डेफिनेशन तो नहीं पता, पर मिसिबल मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाए, कोई एक फ्लूइड जो है वो दूसरे में मिक्स हो जाए, ऐसा। कोई एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड में मिक्स हो जाए या कोई एक फेज दूसरी फेज में मिक्स हो जाए? Okay, just search one thing. What is phase? Okay, you should have an idea on phase. What are हाँ सर, phase? फिर You know how many phases are available? It's 12 standard question, but still, I know many people don't know this. 3 फेज ही होंगे सर, सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है और गैसियस फेज है। Okay, then what are the equation of states? Equation of matters? क्या सर, इक्वेशन ऑफ Matters or मैटर्स? equation of, yeah. Actually, whatever you told now, the gas, liquid, and solid, these three are equation of matters. Matters, yes, matter or matter, yes, equation of matter. And there is two more also. I don't know exact name, but plasma is fourth one, and I forgot. Can anyone tell me the fifth one name? डोंट नो सर। Okay, phase means, okay, you can search what is phase. You can search it in Tarek Ahmed also. Not in Tarek Ahmed, in Abhijit Dandegar, you can go through that phase chapter. Just want to tell you, there are possibilities. One liquid have a two phases, like liquid phase 1 and liquid phase 2. Okay. Miscibility we will discuss when we will discuss miscible flooding, because still I have I need half an hour to complete these sessions, and we will have a discussion on many that factor related to UR. But I will take you through this course. So in chemical flooding, there are mostly we discuss three method. One is polymer flooding. हम polymer flooding discussion करेंगे. Second one is alkaline flooding. Third one is surfactant flooding. Flooding means nothing. We inject something. It impact on reservoir properties or fluid properties. Mostly it impact on fluid properties. It improve the fluid properties, and due to that improvement, it also improve the reservoir properties such as wettability and all. And based on that, we will have a better recovery. So these three method, and we can use these three methods in combination also. Like we can use surfactant polymer flooding. We have polymer alkaline surfactant flooding, that kind of thing also we can use. Miscible flooding, we have a miscible gas injection, or let's consider miscible flooding as a miscible flooding only. There are subcategories like vaporizing drive, gas condensate drive. That kind of things are present with miscible flooding. First contact miscible, multi-contact miscible, and in multi-contact miscible we have a vaporizing drive and gas condensed drive. Okay, so that this topic is again important, miscible flooding, because direct question can be asked in 1 marks, like which substance follow which method. Like if I'm injecting LPG, then does it follow multi-contact miscibility of method or first contact miscibility method? In thermal recovery, method names are already written on the screen: steam stimulation, hot water and steam flooding, in situ combustion. In thermal recovery, we will have numerical questions, and we will discuss those numerical questions as well. Fourth one is the microbial UR. We will not discuss microbial a lot, but we will discuss the principle and methodology of that UR method. Okay, because it is less important compared to all of these three.
understood this methods, because nothing to explain in this. We will have a like complete discussion on this during next session. Tomorrow itself we will start with these methods only. Okay. Okay, Okay, sir. sir. Okay, good. The three more aspects of this course are, and these three are very, very important than this UR method. From UR method, simple theory can be asked, or there are one or two numerics which they might can ask, like one or two methods are there which they can ask in next gate, because I know uh, every time you will get new kind of questions which is based on the previous concept, but it it has a new pattern. So you have to prepare for that questions, then and then your score will improve. And what basic principle and mechanism of UR, it means that they have mentioned this UR method, we have to look into this only. And screening of UR process. Screening, what do you mean by screening? What do you understand by screening of UR process? Can anyone tell me? मतलब सर वो यूआर कितनी एफिशिएंट हो रही है ऐसा हो सकता है सर? नहीं 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 नहीं, एफिशिएंट यहाँ पे एफिशिएंसी तो सेपरेटली है ही हमारे पास, बट screening of UR means ultimately our objective is to improve recovery. Screening means selection, simply we can say selection of UR process. हर कोई method हर कहीं पे नहीं लगेगा ना, so we have to select the method which is appropriate to reservoir based on, and we have an idea based on the reservoir property itself, like this method is suitable for this kind of reservoir and this method is suitable of this kind of reservoir. So that is the screening of your process. Now one thing, there are more than, I can, like we listed here 1 2 3 4 5 6 7 immiscible, again 3 categories are there. 7 plus 3 10, and in gas injection we have a CO2 injection, N2 injection, LPG injections, this kind of thing. So so guys, do you have a question in your mind, like shall I have to remember all these screening criteria for these all methods? Like they have a screening criteria in terms of depth, in terms of viscosity of crude oil, in terms of reservoir permeability, in terms of API gravity of crude oil, in terms of wettability characteristic, in terms of rock type, in terms of depth. Okay, so based on this we select the method. So answer is no, no worry at all. But you should identify method based on the logic. That logic I will teach you during this method. How can you identify the method name? But at least you should know, like I cannot use miscible flooding at a lower depth than CO2 flooding, because it won't able to miscible with crude oil. Okay, that is the simple reason. This kind of stuff, like this kind of logic, you should use. You are, all are able to generate. Then and then, no need to like mug up that all screening criteria. We will discuss this one by one for all methods in next lecture. The next thing is very important, is this concept of pattern flooding and recovery efficiency, permeability, heterogeneity. So we know concepts of pattern flooding. You know what is pattern flooding? I think you studied this in reservoir. If Sir, you yes. went to Tarek Ahmed, like 5-spot pattern, 9-spot pattern, this thing. We will discuss, definitely we will discuss in broad, but if you know, then it's good. Recovery efficiency, it is nothing but it is elaborated in next one. Permeability, heterogeneity. Do you know which are the first of all, what is heterogeneity and what is homogeneity? Can anyone give me the definition for heterogeneity? अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी प्रॉपर्टी सेम हो तो उसे होमोजेनियस कहेंगे, अगर नहीं है तो हेट्रोजेनियस।
And what should be ideal reservoir? आइडियल रिजर्वायर होगा होमोजेनियस, और रियल में हम हेट्रोजेनिटी एनकाउंटर करते हैं. Yes. So another word term associated with this is isotropic homogeneity and Yes. isotropic. Do you know what is difference between these two terminology? यस सर. मतलब आइसोट्रोपिक ऑल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होगी और होमोजेनियस रिजर्वायर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगी. Is it correct? यस सर. Okay, good. I think homogeneous में particular direction. Okay, correct. Okay. Okay, so you know these three terminology. So I will just let me draw. So let's suppose particular direction में properties same है. Let's suppose ये अपना reservoir है. और लेट सपोज आई एम सेइंग कि इस डायरेक्शन में परमेबिलिटी सेम है, तो हम फ्लो को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं. तो इस डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं कि थ्रू आउट दिस रिजर्वायर द permeability is same, then we can say we consider this reservoir as a homogeneous. बट आइडियली ऐसा होता नहीं है, हर एक डायरेक्शन में वैल्यू डिफर करता है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड. बट हम ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारे मॉडल बने हुए हैं वो इस अजम्पशंस पे बने हुए हैं. इफ वी वांट टू ऐड वन पर्टिकुलर, वी वांट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर अजम्पशंस, तो कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा. दैट वी नो. लाइक अजम्पशंस पे ही सारे मॉडल्स डिपेंड होते हैं. इवन अभी भी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहां पे भी पूरा अजम्पशन के बेसिस पे बहुत कुछ चलता है. एनी हाउ, अगर सब कुछ सोल्व हो जाएगा, सबका मशीन बन जाएगा, तो फिर हम इंसान बेकार ही रहेंगे. जो अभी बेसिकली आई कैन सी इन पेट्रोलियम ब्रांच. बट however you can learn many new things and you at least you can secure your job. There is nothing that it's not hard to have a job. Okay, so in heterogeneity, लाइक हमें भी पता है कि लेट सपोज ये रिजर्वायर है, तो हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं कोई भी एज एडवांस लेवल पे, या तो हम इसको ग्रिड में डिवाइड कर देते हैं एंड हम ये मान के चलते हैं कि विद इन अ पर्टिकुलर ग्रिड इट इज अ होमोजेनियस. करेक्ट? हेलो, इज इट करेक्ट? लाइक फ्रॉम पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर ग्रिड हम मान के चलते हैं कि ये Yes, sir. लाइक प्रॉपर्टीज आर सेम, हम ऐसा मान के चलते हैं. एंड वन मोर थिंग, we are lucky कि reservoir simulations are not in GATE course. अगर रिजर्वायर सिमुलेशन कोर्स में होता देन जितना रिजर्वायर पढ़े हो उतना उस पे भी फोकस करना पड़ता, और एक मंथ एटलीस्ट एक मंथ तुम लोगों का बढ़ जाता प्रिपरेशन में. We have a well testing, but we do not have reservoir simulation in course. Okay, so permeability, heterogeneity. So do you guys have any idea which are the coefficient can give the idea for permeability, heterogeneity? Yes, No, sir. sir. Okay, No, so sir. have you 1 minute? Hello, may I connected or may I disconnected? Yes, sir. Okay, so can you able to see the screen? Yes, sir. Okay, but just give me 1 minute.
Okay. So yes. Okay. So we can continue now. So permeability, heterogeneity. Permeability, heterogeneity. There are two or three kind of coefficients, which we will go through that. One is the Lorentz coefficient. Okay. Lorentz coefficient value will can answer what is the uh, is reservoir is a heterogeneous or homogeneous. Another one is a Distra-Person model, I think DP model. Okay, we will discuss that because I think yet questions is not come from this topic, but they might ask you in next gate DS the question from DS model. The next one is a cross flow index, and these three are important aspects here, and we will go through all of them. One more thing I read in Tarek Ahmed. We will discuss that also. And from this topic, we will not just go through overview, but we will have a broad discussion for this topic, because in test series again you will get many questions from these topics: permeability, heterogeneity, and pattern flooding. Next one is the microscopic and macroscopic displacement efficiency. Uh, So macro and micro, here the meaning is not 10⁻⁻⁶ kind of thing. So don't think like that. Macro means it's like macro is macro को हम consider कर सकते हैं above the micro. Okay. So we can say that micro is a sub part of a macro, and from these two we will calculate overall efficiency. So any idea on macroscopic efficiency and microscopic efficiency and overall efficiency? No? No, sir. Okay, not a issue. So today's main agenda is to cover this topic, like not entire topic, but we will have at least definition for macroscopic efficiency and microscopic efficiency. Next things we will going to cover for this is mobility ratio today. Mobility and mobility ratio. And then one more thing we will cover Tabor ratio. Okay. So these 5 topics. So we can start now actual that discussions of EOR till whatever we discuss yet. That is the discussion of the course. And any question yet like related to course and weightage of this subject. No, sir. Anything you want to know regarding EOR, like related to subject? This is the course. Any question from these also? So during just have a 5 to 6 minute break and then we will continue. I want to drink water. So if any question you have, then I can answer during this time. Actually, yet you did not go through that question papers now, as you have many questions. Not an issue. You just do one thing. Uh, that हेलो from yes. हेलो सर, Uh, ये what? फ्लडिंग और इंजेक्शन जो है वो सेम होते हैं क्या? Flooding and injections means like what do you mean by flood? Flood is nothing but किसी का बहाव या इसको ही हम फ्लड बोलते हैं ना. फ्लडिंग मीन्स हम फिक्स वॉल्यूम इंजेक्ट करवाते हैं, तो यू कैन कंसिडर इन दैट वे. You will have a more idea once you know at least one flooding.
which you will learn tomorrow itself. इन ऑल मेथड्स हम कुछ ना कुछ तो रिजर्वायर में इंजेक्ट करवाएंगे ही ना, तभी वो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेगा. दैट्स आई वांट टू से विथ फ्लडिंग एंड लाइक ऐसे हैवी इंग्लिश टर्म आ जाते हैं ना, तो हमें कई बार ये लगता है कि इसमें क्या ही होगा मीन्स, बट एक्चुअली जब हम उसको पढ़ते हैं तो लाइक कुछ होता नहीं है वैसे. All of you are from Gujarati medium itself, or anyone is from English medium? गुजराती medium. गुजराती. Hmm. Okay, even I'm also from Gujarati medium. So is there a Milind? Milind, हाँ सर, यस सर. you can stop the recording now. For next content, make a separate recording video. Okay. Okay. Okay, just let me know once it